as defined. पर्सन में 18 तरह के लोग कंफ्यूज विद डेफिनेशन. अगर आप उनको कंपोजिट सप्लाई से बाहर निकाल देते हो, देयर कैन बी नो टैक्स. खाली बाबली जाओ, नंबर दो के बादाम स्टाम्प खरीदो, काजू बाजू खरीदो, हैम्पर बनाओ, बेचो. So composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient. The word recipient is also defined. You have to continue to suffer through pages to understand the definition. Section 2, subsection 93. Again a means definition. There can be no other recipient. If you see the definition of ocean freight, moving minerals, what Supreme Court said? Supreme Court said, can an exporter be recipient as per definition? He cannot be recipient. Where is the RCM? RCM has to be paid by recipient, reverse charge mechanism, and the recipient is deemed to be a supplier. He said the exporter is not in India. Can he be recipient of goods as per definition? That's why they set aside Gujarat High Court. They said no, not acceptable. That is the importance Supreme Court attached to definitions. All of us, whatever law we read, you have to continue to harp on section 2. If you spend section 70 for 1 hour, spend 10 hours on definition. This is where the result will lie. Not section 70 to 74. So composite supply is a means definition. Supply, section 7 we will discuss. Made by a taxable person to a recipient, section 293, consisting of 2 or more taxable supplies. So in order to attract a lower tax rate, in a composite supply transaction, both supplies should be taxable. Supposing they are not taxable, then we will discuss when we discuss section 778. You will be quite shocked what opinion you are going to get. Within the definition, 2 of taxable supplies of goods or services or both. So this definition is applicable to goods, services or both, or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. So the word naturally bundled was in service tax. I have done a lot of litigation on this particular issue in case of discounts. सात आठ रिट की थी इसके ऊपर नेचुरली बंडल सप्लाई सारे हारे हम लोग बात दूसरी है, बट इट वाज ए बिग फ्रेज देयर. यहाँ भी नेचुरली बंडल इज नॉट डिफाइंड. So where words are not defined, we go through common rule of law, common rule of interpretation, common part of the interpretation. What is naturally bundled? Like I was telling Madam Gunjan, Pashmina shawl 10 lakh rupees, suit 10,000 rupees. Is it naturally bundled? The answer is yes. But there is no valuation link here. If it remains naturally bundled. Now supposing the same suit, she also buys shoes of Bale worth 5 lakh rupees. Can we say that is naturally bundled? No. Not easy, no say or no. In our country it could be no. That's what it is. Supposing with the jeans you wear a big shoe the ladies wear. Uske pehenti nahi. It's an interpretation. That's what is attractive. तो सूट उसका 10,000 रुपए का है, पश्मीना शाल 10 लाख रुपए का है, 5 लाख के जूते. हम बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड है, 5% टैक्स ले लो. वो बोलेगा तुम 15 लाख का तुम सूट ले आए, टैक्स 75,000 रुपए. But law is not, we don't care about the consequences. It is not taxable, it's not taxable. So composite supply, 2 or more taxes supply of goods or services or both, made to a recipient as per definition, means definition, section 2, subsection 93. Made in conjunction with each other and supplied in the ordinary course or furtherance of business. 7 वर्ड है, सातों डिफाइन है सेक्शन 2 में. तो किसी भी चीज में आपको कंपोजिट सप्लाई में लाने के लिए वो 7 वर्ड की डेफिनेशन आपको पढ़नी होगी. Then you will come to say, yes, section 7, the principal supply rate will be applicable to all. Let's go through section 7 quickly on this issue. Section 7 deals with supply. Section 8 deals with composite supply. The tax liability on a composite or mixed supply
shall be now. See, sections 9 is the charging section. Within the charging section, there is a further charging section for a particular act. Tax shall be levied. Tax is levied as per section 9. But since these are exception to section 7, composite supplies, they say that we will do this. The tax liability on a composite or mixed supply shall be determined in the following manner. Third is shall be. There is no other way out. A composite supply comprising two or more supplies, one of which is the principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. So the ready-made garment 5% है. If we take what she has bought, including pashmina shawl, is a naturally bundled combination. Whole thing will be 10,20,000 to 5% only. Simple. I go to Trimila Bimji, I buy a limited Mont Blanc gold pen studded with diamonds. Will this be jewelry? That is an interpretation. I have given opinion this is a jewelry. Common man doesn't buy the pen of 50 lakhs. It could be reverse opinion. But to give a reverse opinion, don't feel shy. cannot buy a pashmina shawl of 50 lakhs. हाँ yes, नहीं वो एक कंपोजिट प्लाई का इशू है, ये क्रिमिनल गुड्स का इशू लगा. But then all the watch store manufacturers will become jewelers. कौन सा नो? Omega. वेरी डिफाइंड है ना, वेरी डिफाइंड है सर. मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ. तारीख सर बढ़िया गोल्ड के बहुत बेचते हैं. Again, debatable issue. Idea is you agree to pay tax. You paid finished. ओशियन फेड जिनको नहीं दिया था, हमने कैपिटल को मत दो टैक्स था, बच गए ना. अब रिफंड लेके दिखाओ. सेक्शन 54 को इन्वॉक करेंगे वो. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिमिटेशन इशू नहीं, एड्रेस नहीं है, वकील भूल गए. क्वेश्चन इज wherever you think it's debatable, better to face litigation rather than pay tax to the government. Government can select tax but it due. If as lawyers we think this is a debatable issue, we will debate it. Have the guts to tell your client will debate it. Don't surrender. कि नहीं यार दे दो. मैं कुछ दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ रहा था, रसीद वाला कोई इशू था, नहीं देना अच्छा है. नो दैट इज नॉट एडवोकेसी. तेरा दूंगा अकाउंटेंट बोलता है टैक्स दे दो. हमें एक्सपर्ट की क्या जरूरत है मुझे लाने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द अप्रोच वी हैव प्रोफेशनल्स. इजी अप्रोच टैक्स दे दो, बहुत आसान काम है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं. We are there to protect the interest of our client and the client. Where there is a debate, contest it. Therefore, composite supply deals with two taxable supplies made by a taxable person. If there are two taxable supplies not made by taxable supply, no tax. Composite supply provision will not get reflected. That is, अगर वो फंस गया उसमें, वो टैक्सेबल नहीं है और वो पकड़ा जाता 50 लाख का सामान बेचा है, then you cannot say sir मेरा तो section 7 composite supply है. No, you are not taxable person. Now let's say take it further. Taxable person is registered or required to be registered. Now we say that you are required to be registered. Now the legal question is, can this phrase required to be registered, can it relate back to the date of his first supply? Will it relate back? पता था जब लाइब्रेरी तभी से मत ही जब. Now this is a big question. मैंने को नंबर ले दिया आज तो टैक्स दे. Now will you invoke composite supply provisions on his past supply? It is from the date where he is liable to be. ये भी डिबेट है, but generally the answer is no. हम लार्ज लोग कभी नहीं बोलते हैं जैसा पढ़ना पड़ता है ना, पैसे तो पढ़ेगा पढ़ेंगे. तो मेरे को क्वेश्चन देना, हम आपको बना के देंगे. Now this is an example illustration. Illustration in a statute serve a huge purpose. मुझे याद है जब हम झावाला का कॉन्ट्रैक्ट हम कुछ पढ़ते थे, जब आईपीसी पढ़ते थे, नीचे एग्जांपल्स होते थे. तब तो हमें इतनी मेरे को नहीं पता था, तो आप असली करते थे. But now you know illustrations give you a great insight into the what is the intention of legislation. What do they say? Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing material, transport insurance is the composite supply. आपकी ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली बंडल्ड है, इनसे नेचुरली बंडल्ड है, पैकिंग मटेरियल भी नेचुरली बंडल्ड है. दैट इज गिविंग यू एग्जांपल कि दीस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डीम्ड टू बी नेचुरली बंडल्ड. लेट अस से आई सप्लाई अ फोन, मोबाइल फोन. आई गिव यू अ बैटरी. लेट अस से बैटरी 28%. एक ही पैकेट में आया. कैन यू से दिस नेचुरली बंडल्ड? आंसर इज नो. Nokia case.
Nokia case war on Punjab as territory. अलग issue था. Nokia case was not interpreting Nestle bundle of law. उनकी entry में लिखा नहीं था. लेकिन this will not work because this can be sold independently. It's not supplied in conjunction. To sell a phone, you don't require a battery. To operate a phone, you require a battery. That is the distinction. But nowadays phones are naturally bundled with the battery. सेम रेट पे लेते हैं. अभी उसमें देखेंगे, चलेंगे. अभी आगे के चलो सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे. We also take up with this mixed supply definition so that you understand. 2 subsection 74. So remember composite supply by a taxable person of taxable supplies to a recipient naturally bundled in conjunction with each other made in the course of business or furtherance of business. Then the rate of principal supply shall be. Mixed supply. Be very careful what we are going to discuss. There is a clear distinction between mixed supplies. Mixed supply means again in the definition 2 or more individual supplies. Taxable word is gone. So now you answer Mont Blanc with liquor supply. क्या होगा? The whole opinion hinges upon this definition. Will you tax? I give an answer, yes, it will be taxed. You get covered in definition of mixed supply. It's a debatable issue. It's an opinion. Mean the full amount. 2 or more individual supply of goods or services, or both, khatam hai isme. Or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. कितनी खतरनाक extensive definition. That is, अगर किसी assessing officer को आपको mixed supply में लाना है, तो उसे प्रूव करना है this cannot be a composite supply. If it's not, it's a mixed supply. और तो कुछ है नहीं. But there the word taxable is missing. अगर मिट्टी बेचते हैं किसी चीज के साथ मिट्टी टैक्स फ्री है तो उस पर टैक्स लगेगा. There are no rules made to give exemption. There should be rules like पर्सनल टैक्स बोलते हैं exemption मिलेगी. हमारे यहाँ आपको इसमें जीएसटी में फिलहाल कोई ऐसे नोटिफिकेशन रूल्स नहीं है जो ऐसी exemption देते हैं. So mixed supply, the highest rate shall be applicable. That is the distinction. That's the definition. Both are mean definition. Both have different import of law. Both have different consequences, and both have serious monetary consequences for the taxpayer. जो लोग एफएमजी सेक्टर में डील करते हैं उनके लिए ये दोनों लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है. बाकी तो कहीं खास यूज होता नहीं. Let's come to the next definition, consideration. We know the meaning of contracted consideration. We know section 25, contracted consideration in Indian law can move from a third person. ये जीएसटी में बहुत बड़े केसेस आ रहे हैं आप जहाँ पैसे किसी और ने दिए, काम किसी और ने किया. जैसे कैन ही is he entitled to input tax credit? Answer is yes. तो कंसिडरेशन डेफिनेशन है यहाँ पर बहुत बड़ी डेफिनेशन. जैसे आज एक एडवांस रूलिंग में पढ़ रहा था किसी में, एक्चुअली एडवांस रूलिंग, आई एम नॉट गिविंग मच वैल्यू टू इट, बट इट हैज अ वैल्यू इन लॉ. किसी अच्छे रेजिडेंट सोसाइटी में बड़ा खुश रहा, उसने उनको 20 लाख रुपए डोनेशन दे दिया. टैक्स किस बात का टैक्स? कहते गिव यू 20 लाख बिकॉज ही वाज सैटिस्फाइड विद सर्विसेज. That is the law. It's reported in economic tax today. That is the interpretation of supply. We'll discuss tomorrow, section 7. Consideration in relation to supply. Now, when is it in relation to phrase we have not discussed. In relation to is used only for the activities which are followed by after in relation to. It's a big phrase. Big phrase is not defined in any act. In relation to phrase is not defined, and not even in Companies Act where this word phrase is used many times. Consideration in relation to supply of goods and services both includes. These are only examples. There can be 1,000 other examples. As long as you guys remember to read definition with means and inputs, your opinion will never go wrong because all of you are educated who can read law. But you have to read the definition very carefully.
एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि जो भी आपकी ओपिनियन है वो डेफिनेशन के बाहर नहीं जा सकती। कोई केस ला पढ़ लो वो डेफिनेशन के ऊपर है। आई रिमेंबर अ डेफिनेशन ऑफ सेल प्राइस इन हिंदुस्तान शुगर मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा जजमेंट दिया, बहुत सारे। सेल प्राइस मींस व्हाट? रीसेंट डेफिनेशन वाज डीसीएम इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने फ्रेट बिल पे अलग से चार्ज किया, तो वो सेल प्राइस से एक्सक्लूडेड है। किसी अफसर ने बोला अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट लिखा था फॉर, कहते साला बिल पे लग करके टैक्स माफ करते तुम्हारे को। नो, you are liable to include freight in your sale price, pay tax. So they changed the law, they interpreted the definition of sale price. If the freight is mentioned separately on the invoice, no central sales tax is levied. They said no, it's a camouflaging the transaction. You are liability for that for. Just based on a definition, they levy the tax. So when we read consideration, you have to keep in mind anything you do where you get money, unless exempted, is taxable. जब तक लॉ में कोई स्पेसिफिक उसकी एग्जम्पशन नहीं, आपको टैक्स लगेगा। Go with this presumption. Once you go with this profession, go with the first presumption, then work backwards. क्या हम इससे निकल सकते हैं? As a lawyer, as a professional, मैं ट्रेनिंग लेता था, हमें खालिद अहमद साहब ने बोला the guy is going to die. आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट मर्जी है, बट केस आपका इंतजार करके जाना ही दो, guy is going to die. जो पैसा आपके पास आया है, सपोजिंग आई एम यूजिंग ऑडिट, ऑडिट तो माना मत जाओ। मैंने पीछे महाराष्ट्र में लेक्चर दिया था, दे फॉलोइंग इट। बैलेंस शीट का टोटल करा लो, फिर तुम्हारे बैंक में 200 करोड़ रुपए गए, इसका हिसाब दो, बस खत्म बात। वो क्या क्या ऑडिट करना है? I can tell you 10 companies reports were shown to me when I went to Bombay. None of the company could explain in 70% of 200 crores. ये लोन है जी, उसने मेरे को गिफ्ट दिया था, जिसके पैसे भूल गया, ये पैसे किसी ने मासे मांगे ही नहीं, भाई झूठ सच। No addresses, no consequential documents. So consideration means any. The word any means it is not qualified by any noun. Any means anything, whatever. Any payment made or to be made. The word is or. So remember, or in English is disconjunctive. It can be either or, both are payments. Whether in money or otherwise, barter system. In respect of, in response to, or for the inducement of. इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो आपने सीधे माल गुड्स खरीदे, इन रिस्पॉन्स टू किसी ने आपको बोला माल खरीदो, मैं पैसे दूंगा आपको, और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट फोर वर्ड आर इंपॉर्टेंट। एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट or state government. The word subsidy is not defined. Subsidy is always in response to a notified government scheme. Now I give you an example. ये जो PLI scheme चल रही है, मेरे पास एक मेरे टेबल पड़ा है, पेपर है, क्या ये सब्सिडी है? किसने भेजा मेरे को? मांग रहा है किसकी बनते हैं, क्योंकि इसमें मिल रहा है, तुम काट तो रहे हो। That is, even to understand this, we have to know whether this incentive can be categorized as subsidy. This is under a government notification. Central Parliament has approved it, but this is not a subsidy. So before you want to exclude any consideration from the purview of GST framework, you have to prove this was a subsidy. Central government or state government. And you will be shocked. Central government, state governments are also defined only for this purpose. Yeah, 253.
Government means the central government. So even this word is defined. So what is central government? There are enough Supreme Court judgments. What is central government? We are not going to get into this advanced level of discussion here. But if you Google, you have more interest, you will understand what central government means. One is where the money goes from consolidated fund of India. That's one definition, the normal definition. But there are other definitions. Can we say a central government, autonomous body can be central government? NHAI, is this a central government? PARC, is it a central government? There are so many questions that come up when you deal with profession. But government is defined. If you come to a conclusion that yes, this is within definite central government, this will be applicable. So is the state government. State government is defined in sector. Delhi Good service tax. The monetary value of any act or forbearance in respect, response, and inducement of supply of goods and services, both whether by the recipient or by any other person, but shall not include subsidy given by any act or forbearance. Supposing I abuse Rahul publicly, I defame him. I will never do that, don't worry about it. माफी मांगूंगा शाम तक मैं नौबत नहीं आने दूंगा. I abuse him. Rahul is your son also. हाँ, उसके साथ रोज होते हैं. कोई भी कहता है मैं पहले कैसे कैसे. Now, Rahul tells Mr. Bhatia, I want to sue Mr. Burma. This is right. I tell him, I'm sorry, he said, message was. Now, this is an act of forbearance. Where he had a right to do, he is forgetting his right. This is a part of consideration. This is part of supply. Right? Liquidated damages have also been held as a part of consideration. That is, you delayed the contract work and you are liable to pay damages. Supply Delhi में इतना होता नहीं, we will not touch it. Conveyance. The motorway like almost same definition है. Conveyance includes a vessel and a vehicle. गाँव में बैलगाड़ी. Will this be a conveyance? Maybe includes. Inclusive action. That is principle of legislative justice. Their words. अगर मैं बैलगाड़ी में मोटर लगा दूं, अगर रिक्शे वाले लगा दे मोटर लगा जब से ई-वे बिल आया बैलगाड़ी is back in existence. So, what we are learning is कि why this definition will not include because the principle of legislative justice will apply. Because definition is inclusive. If for means, then legislative principle is not applicable. Credit note. Meaning a document issued by a registered person under subsection 1 of section 34. Who can issue credit note? Not taxable person. Registered person under section 25. Otherwise you cannot issue a credit. Debit note same, you forget it. Deemed exports Delhi में नहीं होते, we will not touch it. Let's go to document 241. Okay? Kali will see? Detail 41. Document includes, again it's an inclusive definition. Written, ये जीएसटी की डेफिनेशन है और एक आईटी एक्ट में भी इससे छोटी डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट. बहुत बड़ी डेफिनेशन है. Document includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause clause I of section 2 of IT Act. This clause I of section 2 is only for the purpose of electronic record because the electronic record is followed by word and. ये सारा डॉक्यूमेंट है. तो अगर आपका कंप्यूटर उठा के ले गए ये डॉक्यूमेंट्स. And documents don't tell lie. Always remember as a lawyer. Documents never tell lie. Let's come to exempt supplies. This question 47. It's again a means definition. Supply of any goods or services both which attracts a nil rate.
शेड्यूल में टैक्सेबल फ्यूल में अगर इसका नील रेट है तो एग्जाम सप्लाई, और विच मे बी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11, गवर्नमेंट को पावर है एग्जाम करने की सेक्शन 11 में, और अंडर सेक्शन ITST एक्ट, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। तीन चीजें, नील रेट है तो एग्जाम सप्लाई, सेक्शन 11 में कोई नोटिफिकेशन है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, एग्जाम सप्लाई है, और विच इज नॉन टैक्सेबल। व्हाट इज नॉन टैक्सेबल? सेक्शन 9 says to liquor for human consumption or petroleum products or whatever, and sale of goods made or sold outside India, that is also non taxable by way of preamble and the jurisdiction of the act. कुछ एडवांस रूलिंग रिवर्स में है सर्विसेज के ऊपर, but जनरल रूल इज दिस। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? सपोजिंग आपने इतना बड़ा ऑफिस बनाया जिसमें आपने 50 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा कर दिया, उसमें आपकी एग्जाम सप्लाई 45 लाख की या 5 लाख की टैक्सेबल, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 लाख का 45 लाख है। अगर आपने इसी ऑफिस को नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी की है, व्हाटएवर, उसमें एनी मोर एग्जांपल, therefore whenever you are dealing with a client who is dealing exempt, taxable and non taxable supplies, make a list. Okay, buddy, what do you do? Facility management companies facing this issue. जो भी करते हैं नॉन ऑफ आर के, हम तो टैक्सेबल नहीं, लॉयर डोंट गिव एनी सर्विस तो क्या करेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा इशू। नाउ सपोजिंग दे हैड क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, immediate consequences for that dealer. So you are entitled to claim input tax credit strictly as per section 2, that is section 16, strictly. अगर सेक्शन 17 में इनपुट टैक्स क्रेडिट बार्ड है तो बार्ड, you cannot claim. That is why section 16.2, 16.4 deal with negative clauses. Section 3 notwithstanding, 16.4 says no credit shall be availed. We will discuss the word avail, utilize, taken, इसका क्या मतलब होता है? Supreme Court has defined in service tax laws. So exempt supply के बहुत serious consequences होते हैं. अब तो ITC was ITC is applicable only for taxable apply unless this supply is zero rated. Zero rated is not exempt supply. कई लोग कहते हैं टैक्स नहीं लगता, नो, जीरो रेटेड की डेफिनेशन है मैं आपको इनपुट टैक्स वापस करता है। Since they are exports in any case in GST they can be taxed. You pay IGST on exports, claim. Because there is amendment in Article 246 where the central government decided to change the law. तो वो 286 के लिए एक्सपोर्ट टैक्स नहीं होता, वो आप जजमेंट GST में कोई रेलेवेंस नहीं। But somebody will challenge that section also, article still remains. Lawyers like Mr. Bhatia have to apply their mind and say, can we challenge it? So exempt supply, very careful. जब भी आप किसी का आपको शोकाज नोटिस आता है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कोई आपकी एग्जाम सप्लाई तो नहीं है भाई, नॉन टैक्सेबल तो नहीं है, सेक्शन 11 का तो नहीं है, वो जो गिफ्ट है वो सेक्शन 17 का पार्ट है। सेक्शन 16 इज द सब्सटेंशियल प्रोविजन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, 17, 18, 19, 20, 21 या मशीनरी प्रोविजन, जैसे सेक्शन 9 2 बैट था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आर सब्सटेंशियल प्रोविजन, बाकी सब मशीनरी प्रोविजन है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा नहीं होगा। तेरे बहुत सारे सवाल हैं, बस शिफ्ट करेंगे तब बताएंगे, आई एम लीविंग इट, अब इसकी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, जो पुराने STP हैं हमारे यहाँ, उनको देखना है। If you are still in practice, it's illegal. Means any person who has been approved under section 48 to act as some practitioner. And what is section 48? अगर कोई STP यहाँ बैठे हैं तो अपना वोट लें, immediately कराएं। Now this will amount to impersonation of a statutory authority. That will be a very illegal act. ये सारे रूल हैं कि कौन करेगा क्या नहीं करेगा, सेक्शन 48 पढ़िए। अगर आपको ये है तो आपको कमिश्नर को मूव करना है। The bar should also take action on this issue. India,
But India is defined differently in Customs Act, differently in GST Act. India means the territory of India, वगैरह वगैरह. We will not get into this. We will do when we section 16 of IGST Act. Input. Input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business. इसमें कोई taxable supplier word use नहीं है. Because input doesn't mean कि input is credit. So input is only goods, not services or both. Other than capital goods are where you have to claim input as credit and goods are capitalized in the books of accounts. If you are not claiming input as credit for capital goods, you need not bother about the definition. So input means other than capital goods. So अगर input में आपको credit लेना है, capital goods का credit अलग उन्होंने कर दिया, यहीं से अलग कर दिया, आपके उनकी goods की definition निकाल दिया आपको. Input service means any service used or intended to be used supplier in course of furtherance business. Again, word is any. दोनों में word any है. Any damn service you use. इनको सभी distributed we will not do it at present. Input tax. Only first two line we will read. बाकी सब 13 है. In relation to a registered person. Who is the registered person? They are not using the word taxable person. Section 294, subsection 94. ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ना. सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलता इनपुट टैक्स क्रेडिट. उनकी डेफिनेशन अलग-अलग है. Registered person means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a embassy value ID. So till you get a certificate of GST registration under section 25, your liability to claim input tax credit does not arise. Your right to claim input tax credit does not arise. So input tax credit in relation to this person means the central tax वगैरह वगैरह that you all know, but does not include a tax paid under the composition language. So you forgot composition section. उन्होंने यहीं से बाहर कर दिया, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में नहीं है. ऐसा क्यों करती है लॉ मेकर्स? इसको मैंने एक बार कमेंट किया था, ऐसे आज ने क्या होता है, प्रोविजन में लिखा है, कहते हैं द प्रोविजन कैन बी इंटरप्रेटेड, डेफिनेशन कोर्स कैन नॉट चेंज, इफ द मीनिंग इज अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल एंड देयर इज नो अदर क्लैरिटी रिक्वायर्ड, दे कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन. दैट्स व्हाई द सफारी रिट्रीट जजमेंट इन माय व्यू विल बी ओवररूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. बिल्डर्स विल बी हेल्प्ड विल नॉट एंटाइटल्ड. जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो वेरी क्लियर द फॉलोइंग द लॉ. अगर चंद्राचूड राइट्स आई कैन गारंटी यू विल नॉट गिव इनपुट टैक्स बिकॉज़ दैट इज डेफिनेशन पार्ट. बहुत प्रॉब्लम है उसमें. एंड द लैंग्वेज इज क्लियर, वेदर फॉर योर ओन यूज और यू विल नॉट गेट एनी इनपुट टैक्स. बात खत्म हो जाती है. आई डोंट नो हाउ विल कोर्ट इंटरप्रेट एंड ऐड वर्ड्स टू गिव इट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. इसकी बनती नहीं बात. So I made a video in favor of safari retreat, but I changed my view wrong. Now input tax credit means the credit of input tax. बहुत बड़ा फ्रेज है सेक्शन 16 के लिए. We'll discuss इसका क्या मतलब है सेक्शन 16. 5 मिनट लगेंगे मुझे आपको बताने के लिए 3 वर्ड का मतलब है. What is credit? Not taken away the utilization. That is controlled by section 49. It's only definition. When will you get credit for input tax credit? That is the question. For example, one of the conditions is you should have received the goods or services or both. कारों में क्या होता है? टैक्स इनवॉइस आता है, एडवांस पेमेंट जाती है, कारें 2 महीने के बाद आती है. They cannot claim credit for the input tax. They can get input tax credit only when goods are received. You have done it, it's illegal. So this is the import of this kind of definition when you apply to a particular substantial provision. Interstate supply we will not touch here. Invoice. Would you ever believe they have
Define the word invoice. It has a purpose. Abstract में भी था. Invoice or tax invoice mean that tax invoice refers to section 35. There is no performa prescribed for tax invoice, only particular to be mentioned in tax invoice. So once a tax invoice becomes a definition of part of definition, you should strictly comply with the provisions of section 31. If as a revenue officer rejects your tax invoices on this ground, you will have to actually go on litigation. टैक्स लिखा सब कुछ ठीक है, वो टैक्स में ऐसा कोई गलत. अगर आपने चेक गलत साइन कर लिया, आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए, कैन बैंक ऑनर दिस चेक? कोर्ट विल डिसाइड, but so far the view is you have to strictly comply with this law. Inward supply, इसकी रिटर्न जाती है, आपको सप्लाई इनवर्ड की सप्लाई जाती है, रिटर्न जाती है. In relation to a person, shall mean, it's not means, shall mean. This is more imperative than means in law. Shall mean receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition, or any other means, with or without consideration. That is inward supply. वो सोसाइटी को 10 लाख में दे गया गिफ्ट. That is inward supply for services. फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे. कोई कहता है जी मेरी कंपनी घाटे में, मैं आपकी 60% सैलरी डोनेट करता हूँ. ऐसा होता है रिसेशन. We have Vineet Bhatia, one of our great lawyers in the bar. Let's clap for him. He is also going to be addressing all of us soon. So he doesn't know the subjects, but he doesn't require to be told what subject he has to speak. He's spoken virtually on all the subjects. Inward supply in relation to a person shall mean receipt of goods or services of both, whether by purchase, acquisition, or any other means with, for example, amalgamation merger. You acquire assets. Subject to 43, you will have to show them in your returns because you are acquiring assets, no tax. But once that assets become a part of your block of assets, then the output tax liability starts arising. Job work. Notwithstanding any circular, there is no notification circular by central government to mean circulars are mobile. They are binding only on the officers. Or not on courts in any case. Job means, this is a means definition. There cannot be any other interpretation of this definition. A beneficial circular issued by government, unless challenge, remains binding on the officers, and we are very happy with it. Means any treatment or process. If you are a good litigant, lawyer, you have to know what is treatment, what is process. A treatment, for example, steel tubes. You are applying zinc. That's a treatment. Processing, when you buy old coats, mint it and make gold better. That is processing of gold. So you have to go through what does this mean by treatment or process undertaken by a person, not taxable, not registered, by a person. You have to continue to keep in mind wherever definition would require taxable, non-taxable, registered, required to be registered, or simply a person. A person of goods, so job work is applicable only to goods. So if you are doing a works contract service and I do a subcontract on job work, that cannot be a job work. A works contract is a service, not goods. So given transaction, if you know the definition, you simply realize, no, ये job work नहीं. खत्म हो जाती है बात, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं. Goods belonging to another registered person. Now section 25 comes into play. Any person can do a job work by way of treatment or process on goods belonging to another, provided goods belong to a registered person. And the expression job work shall be construed accordingly. So जितने दिल्ली में जॉब वर्क बहुत होता है, हजारों केसेस, तो जो भी एक तो हमने किए वो सारे गलत थे, तो सबको टैक्स लगा और टैक्स मांगा है. For example, you give a cloth to Joe can make shirts. What is he doing? He is treating the cloth, he is processing the cloth, he is making something which is commercially visible. It's a very different marketable product with amounts of manufacturing. Just an example, notwithstanding the circular issue.
लोकल अथॉरिटी बहुत बड़े डेफिनेशन है ये एग्जाम्पशन के। 86 एग्जाम्पशन हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को दी जाती है, जो रियल एस्टेट में कॉन्ट्रैक्टर्स को एग्जाम्पशन मिलती है। 86 तरह की, 86 है भैया, 86 Not counted, but there are n number of. यस। तो ये लोकल अथॉरिटी, ये सारा ये बेकार का काम है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। लोकल अथॉरिटी मीन्स, अगेन it means the definition. There cannot be any other local authority other than mentioned here. A panchayat as defined in clause D of article 243 of the constitution. 14 लाइन की डेफिनेशन है पंचायत की, आर्टिकल 243 वो पढ़ना है आप। A municipality as defined in clause E of article 243 of constitution. अब आप कहते हैं MCD मुनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली तो म्युनिसिपैलिटी है। No, don't jump to conclusion. It has to satisfy the criteria laid down on article 243. If it's yes, most of them will be. But as a lawyer, you should not jump. अच्छा municipal लिखा है, बस हो गया, exemption मिल गई. I was discussing with somebody a case in notification. रेलवे सप्लायर, उसने सारी सप्लाई 5% टैक्स लगा दी, उसका स्लोगन नोटिस हो गया 350 करोड़ रुपए की सेल 4 सालों में, अभी 5-6 महीने पहले की बात। जान निकल गई, कहते हैं 28% टैक्स दो, 5 से 28। उनका MD आया मेरे ऑफिस में, एक लड़के का नया ऑफिस खोला, दूसरा तीसरा केस है नया हमारे केस, क्या है 5% है, नोटिफिकेशन है, मुझे पता है कि मैं आपको किसने एडवाइस किया, अरे मेरे CSA मेरे साथ है, लर्नड मैन बट लिटिल कैजुअल। मैं उसको पूछा, मैं आपने नोटिफिकेशन पढ़ा था कभी आप? तो वर्बली पढ़ने क्या बात है, जग डाइट बाहर है, 5% है, करप्शन के लिए कर रहे हैं, मेरे डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन है ओनली व्हेन यू सप्लाई गुड्स कवर्ड बाय 8607 सप्लाई लेस 8538। वो एमटी 2 मिनट तो बोला नहीं, इतना बड़ा जब 28 से 5 करते हो कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पैसे लो ना क्लाइंट से। उसके सामने बोला मैं कि मेरे पास है, मैं तो 50,000 लूंगा, मैं नहीं दूंगा इसके मैंने पैसे लो क्लाइंट से। कुछ यू जस्ट ये सेवा बोल दिया 5%, वो रियल में सारा माल इससे खरीद लिए 5% रिलायंस थी। बट वंस यू डू दिस एज ए लिटिगेंट लॉयर, कंटिन्यू टू कीप एन आई ऑन दी डेटा डेवलपमेंट्स। We replied the show cause notice running into 200 pages just to delay the matter. Under certain circumstances, it's better to delay the matter as a litigation lawyer rather than die today, die tomorrow. कल भी तो मर सकते हो, आज क्यों मरना है आपको, कल मर लेंगे। मैंने बड़ी साहब से सीखा, हम जब करेंगे जब हम नहीं करना केस, तो दे दे गाली जितनी हमारे को दे। Now luckily a judgment came in Westinghouse Saxby versus State of West Bengal, where Supreme Court interpreting Rule 3 and 3A of SSL rules, they said if a particular part is made according to specifications of a particular industry can be used only there, then that chapter will be relevant, notwithstanding where the goods capital is. विनीत मैंने उसका एक सप्लीमेंट्री बाई फाइल किया, गुड़गांव में DG है, लेकिन सर अब डामर्जी में so as a litigant lawyer when you give an opinion it gives you further money, but keep an eye के जो opinion ने दिया था याद रखो हमने क्या लिखा था, उसका लॉ में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या उसको भी याद रखो, राइट? सो व्हेन यू रीड MCD म्युनिसिपैलिटी डोंट जंप, अरे है तो हो गया काम, आपका टैक्स फ्री हो गया। नो, म्युनिसिपैलिटी नॉट एज पर DMC एक्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो उनकी टर्म्स हैं तो यस। देन इट कम्स ए म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं होती है, कंटोनमेंट बोर्ड मिलिट्री का, ये 3 कंटोनमेंट एक्ट्स आपको जब पढ़ने होंगे बिफोर यू टेक दिस एग्जामिनेशन इज एप्लीकेबल। रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ए डेवलपमेंट बोर्ड कंस्टिट्यूट एंड आर द मंडे रीजनल काउंसिल सो एंड सो, दैट इज wherever local authority enjoys an exemption as a recipient or supplier of goods, the word लिख रहा लोकल अथॉरिटी, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है इनके ऊपर है, आपको उसको देखना है कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी एक्ट इज जस्ट नोबडी, दे नो exemption to energy, जितनी ऑटोनोमस बॉडी है दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ दीस डेफिनेशंस, एंड neither central government nor state government nor and local authorities. For example BACS
Not a local authority. Because till you satisfy this criteria laid down in these provisions, you cannot call them local authority. So that is the meaning of definitions. Location we will manufacture. We read the job work means any treatment or process on goods belonging to by a person belonging to a registered person. And the word job work shall be construed accordingly. That's the definition of job work. Now we come to manufacture. You will understand what the distinction. Manufacture 272 means, it's a means definition again. I told you most of the definitions are means. Where there is a tax liability, they are restricting definition to means. Where they want to expand the scope of taxes, they have to use the word includes. Means processing of raw material. Job work also use the word processing. But इस context में the processing का मतलब change हो गया. So remember section 2 opening sentence, unless the context otherwise requires. This is one example. Here the processing requires unless the context otherwise. अब इसको दिया नहीं, वो जवान साहब सोने आए ना. Manufacture means processing of raw material or inputs. So what is inputs? Goods. Inputs are defined. Raw material inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use, then the term manufactured shall be used. So कपड़ा देके शर्ट बनाओगे दोनों अलग नहीं बनते. Let us say I give a jeans का I give a grey cloth, इसको blue में convert करो. Still remain the cloth. But what the fact of this manufacturing is a different problem. क्योंकि जो raw cloth की jeans नहीं बनती. तो ये दिल्ली में ऐसे बहुत सारे केस लिटिगेशन आपके पास आने वाले हैं. They are in process. Market value. Give you a background. Section 15 deals with valuation. If there is a transaction of valuation of goods or services or both, which is at arm's length, that is between unrelated person, and where money is the sole consideration, then the value mentioned on tax invoice is sacrosanct. Nobody can question it. But if it's proved on record by the revenue officer, the transaction was not so, then comes fair market value. We have defined market value, not fair market value. Fair market value defined in section 15. There is a distinction between fair market value and market value. Market value shall mean the full amount which a receiver and supplier is required to pay in order to obtain the goods of both like kind and quality. Now supposing in an assessment proceeding, they say the transaction was between 180%, your goods are undervalued. Now you come to the market value or fair market value. अब कितना प्रॉब्लम होगा? Supposing your imports were, let me give you one more example. Supposing through a hawala, an importer buys mobile phone at 900 rupees. This is the actual case. यहाँ पर देखिए. 900 quotes में उसने bill of entry file किया. Bill of lading is when goods are exported and exporter issues bill of lading from the exporting country. And bill of entry is a document which is a self-assessment order done by the importer who files, is accepted by the concerned superintendent and goods are cleared. But this is a self-assessment. Like you have a GST, you file a return, this self-assessment. Now if this self-assessment is reassessed through audit or otherwise, supposing 900 रुपए का 4000 रुपए होगा, आप क्या करेंगे? Law is silent. Because section 15 deals with only domestic goods, not imported goods. Imported goods are valued as per section 4 of custom tax. Section 14 of custom tax. Domestic goods section 12 के साथ है. That's the case. Why? Even if he wants to raise a debit note on the buyer, if he accepts, if the limitation is over, what will happen? Because Supreme Court in one of the cases of Steel Authority versus State of West Bengal, 2003, they said if your price was provisional, any final price shall relate back. If original date 16/4 limitation expired, what happens to ITC? This is part of litigation. We all have to understand as lawyers of this bar. And our bar is the most important bar in the country. We have very well-read people here. The very fact you will listen to me for such a time, so this itself is a whole credit goes to you. If at my speed you can hear me, that's very good. So remember this
market value question will trouble us in times to come. This mobile phone industry suffering from this is hawala shwala what's happening is all valuation issues. And section 14 is more serious in valuation. I do customs. बहुत बड़ा सेक्शन है क्योंकि सेक्शन 15 में उसको इन्वोक किया गया है तो वी हैव अ प्रॉब्लम विद फेयर मार्केट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू मिक्स सप्लाई ऑफ टन मनी मोटर व्हीकल पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता 75 कौन से मोटर व्हीकल नहीं मिलता मोटर व्हीकल शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू क्लॉज 28 सेक्शन 2 मोटर व्हीकल एक्ट जो मोटर व्हीकल्स वहां हैं उन पे क्रेडिट नहीं मिलता सपोज यू बाय अ बुलडोजर to see whether it's a motor vehicle. You want a hovertizer. You want to buy a dumper. आपको देखना है कि डेफिनेशन में है नहीं है तो आपको क्रेडिट मिलता है. What is motor vehicle? Right? Now this is again once you adopt in a parent act definition of another act by reference, then all judgments of that act shall be equally applicable. लेकिन आपको पढ़ना है. जैसे आज हम वी आर डूइंग दिस 25th डेफिनेशन एंड काउंटिंग इसमें आपको मोटर व्हीकल का एक पन्ना लगा के ऐसे हाथ लगा लो सारी उम्र का आपका रहेगा इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाली मोटर व्हीकल कोई जरूरत नहीं इनको करने की नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अभी डेफिनेशन है इनकम टैक्स में कैसे कोई लेना देना नहीं नॉन रेजिडेंट है और टैक्सेबल पर्सन है means any person who occasionally undertakes transactions without involving supply of goods service both whether principal or agent or any other capacity but who has no fixed place of business or residence in India. अब इसकी टैक्स रेट को बनती है इसको टैक्स नहीं बनती है तो डेफिनेशन मैं लंदन में बैठा हूँ मेरे यहाँ कोई ऑफिस नहीं है मेरे पोखर नहीं बना रखा कोई फिक्स सिंबल पर नहीं मेरा कोई हवाई जहाज में मैं हैंगर नहीं बना रखा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तो वहीं से ट्रांजैक्शन करता हूँ यहाँ से माल सीधा यहाँ पे इसकी लगती बनती है that will be a non-taxable person we will discuss by section 9 non-taxable territory means the territory which is outside the taxable territory so अगर दिल्ली का एक्ट है तो पंजाब इज non-taxable territory for दिल्ली एक्ट या CGST है या IGST है तो इंडिया से बाहर की कोई टेरिटरी non-taxable जैसे वैट में होता था लोकल वैट है तो दिल्ली में टैक्स लगेगा सेंट्रल में लगेगा सेंट्रल में लगेगा सेम प्रिंसिपल है फॉलोड है नोटिफिकेशन Puneet is a better person to talk on notification he tells many notifications notification means a notification published in the official gazette and the expressions notify and notified shall be construed accordingly we read 171(2) central government with recommendation of council can appoint any authority through a notification तो अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ है दैट इज नॉट नोटिफाइड येट बना के रखिए अपने टेबल पे अपने लोगों को दे दिया वहां लिखेगा दिस लॉ वाज देयर इवन इन पैट एक्ट आई थिंक वी क्लोज हियर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच आई इनवाइट मिस्टर भाटिया टू गिव अस अ फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम बिफोर मिस्टर भाटिया आपने इतना अच्छा बोल दिया कुछ है ही नहीं आपकी सर डिस्टेंस चाहिए कोई अब चलिए होती है उम्र की बात होती है आप लोगों से हमने सीखा था आपको जो भी आता है हमारे Probably the best lecture on GST which I have